A company has fixed cost of rupees 10,000 and the cost of producing 1 unit of its product is rupees 50. If each unit sells for rupees 75, find the break-even value and also find the values of X for which the company always results in profit. Results in profit. So given, here is given to the question just fixed cost equal to rupees 10,000. That means FC. And cost of production per unit for 1 unit rupees 50. And this is the variable cost per unit. That means VC. And SP of 1 unit price equal to rupees 75. And the number of production of demand X. Okay. नंबर ऑफ प्रोडक्शन और डिमांड इक्वल टू एक्स. ये हमको प्रोडक्ट करना है, सेल भी करना है. ठीक है, ये भी गिवन है. फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स और वैल्यूज. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच कंपनी ऑलवेज रिजल्ट्स इन प्रॉफिट. यही निकालना होगा. चले एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट टोटल variable cost on a TVC. That means variable cost per unit is 50 into number of items X, that means 50X. Cost function means total cost for production. क्या है? Total variable cost plus fixed cost. Total variable cost 50X and fixed cost 10,000. Clear? Okay. The one is CX for cost function 50X plus 10,000. After that, the total revenue. Total revenue means क्या है? Total SP, selling price. The revenue function will be RX equal to एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 75 है. टोटल नंबर ऑफ आइटम्स X है, तो 75 इंटू X 75X. तो टोटल रेवेन्यू हमारा 75X. एंड प्रॉफिट फंक्शन will be what? Now profit function means to profit. Profit कैसे मिलता है? The total revenue minus total cost. That means revenue function minus cost function. Revenue function 75X, cost function is this. बस by calculation 25X minus 10,000. That is the profit function. क्यों ना एक चीज़ याद रखेगा, जो भी क्वेश्चन दो हमारा ऑलवेज प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलेगा वही सोचना है. और प्रॉफिट फंक्शन निकलने के लिए इफ यू वांट टू फाइंड प्रॉफिट फंक्शन देन यू हैव टू फाइंड रेवेन्यू फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन. वी नो दैट ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड सेलिंग व्हेन प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू 0 देन ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ वैल्यूज आर ऑकर. Okay, Px equal to 0, that means Px equal to 25X minus 10,000 equal to 0. After solving that, X equal to 400. अर्थात break even values are 400. अर्थात it shows that when our production will be 400 items and selling items will be 400, then our profit will be 0. That means हमारा cost price, total cost price and total revenue, the total selling price is same. After that, next question. Also find the values of X for which the company always results in profit. And the values of X निकालो जब कंपनी प्रॉफिट ऑलवेज प्रॉफिट में रहेगा तो क्या होना चाहिए, वो कंडीशन क्या होना चाहिए. जब 400 आइटम करने का टाइम हमारा प्रॉफिट 0 है, उसके बाद और एक आइटम करेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा. वो उसका जो सेलिंग प्राइस है वही टोटल प्रॉफिट है. तो देयरफॉर द कंपनी विल ऑलवेज रिमेन इन प्रॉफिट इफ इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स मोर देन 400 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट. कंपनी विल बी प्रॉफिट যখন व्हेन कंपनी कैन प्रोड्यूस 400 more than 400 items and company can also sells more than 400 units. Then company always retain in profit function. Okay, always retain in profit or profit function, and that is the answer 7.
Question number 14. The price of selling 1 unit of a product when X units are demanded is given by the equation P equal to 4000 minus 2x. তাহলে प्राइस पर यूनिट इक्वल टू क्या है 4000 minus 2x. The fixed cost of the product are rupees 20,000 and rupees 1,484 per unit as the cost of production. Cost of production means variable cost. So therefore here is given that variable cost 1484 and fixed cost is rupees 20,000 and price per unit equal to 4000 minus 2x. And this is the demanded unit is X, because demanded unit, why it is called demanded unit? Because we have to produce X units also, because for no loss or no gain. A production करना ही है, we have to produce X units for no loss, and that's why X units is the demanded unit. So therefore SP here is given that given की SP per unit P equal to this, where demanded item is X pieces, the fixed cost is FC this, and the cost of production per unit variable cost or per unit 1484 per unit का. Find the level of sales at which, क्या बोला, find the level of sales at which the company can expect to cover its cost. To cover its cost means profit will be zero. Profit will be when the profit will be zero against some items, and that some item is the key level of sales. So therefore total revenue function will be P into S, price per into item. That means this is the revenue function RX, and total variable cost, total revenue function, total revenue. Therefore find the level of the sales of the which of the company covers this cost, and the total revenue equal to revenue function, that is RX equal to price per unit into number of items which will be produced. This is the RX, and the total variable cost TVC क्या होगा ना, variable cost 1484 per unit. Here is given that variable cost 1484, cost of production per unit, that is the variable cost 1484. The total variable cost number into number item, the number of item 1484x. Cost function will be TBC, total variable cost plus FC, that means it is the cost function. And profit function PX, what will be the profit function? We know that RX minus CX. CX means revenue function, that is the total SP for X unit, and CX is the total cost for X unit. दो माइनस करने से मिलेगा A. प्रॉफिट फंक्शन इज माइनस 2x का प्लस 2516 माइनस 20,000. तो हमारा आंसर क्या, व्हाट इज द डिमांडेड आंसर? फाइंड द लेवल ऑफ सेल्स एट विच कंपनी कवर्स इज कॉस्ट. कंपनी कवर्स और कंपनी रिगेन इज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. You have to find out that level. That means number of production, at which number of production the company has not any loss or has not any profit. That means Px equal to profit function will be 0 plus Px equal to 0, this equal to 0, minus 2 common. You have to take minus 2 common. After that x square minus this रहेगा. ठीक है, माइनस 2 कॉमन लेने का बात है. माइनस 2 से हार्ड टर्म्स को डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वही ब्रैकेट में लिखना है. ठीक है, माइनस 2 स्क्वायर से माइनस 2 कॉमन लेने से माइनस 2 से डिवाइड करो तो प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा. प्लस से माइनस कॉमन लेने माइनस, ऐसे हो गया. आई होप दैट यू आर बेटर अंडरस्टूड अबाउट दिस फैक्टराइजेशन. x minus 8, x minus 1250 equal to 0, and here is the multiplication x minus 8 into x minus 1250 equal to 0. Therefore 1 must be 0. दोनों फिगर का मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू फिगर्स, द मल्टीप्लिकेशन इज 0, and that's why 1 must be 0.
either x minus 8 equal to 0, x minus 125 equal to 0. তাহলে here for x equal to 8, x equal to 1250. তাহলে the level of sales at least क्या मांगा? What was the answer? What are the questions? Now find the level of sales. Find the level of sales at which company covers its cost. Company covers its cost. So company covers its cost means profit function must be 0. Profit function RX minus CX just निकल गया, ठीक है, and profit function will be 0 and that's why profit function equal to this equal to 0. -2 कॉमन लेने का बाद है -2 को हर नंबर को हर टर्म को डिवाइड करना है, तो इसको -2 से डिवाइड करने से x², इसको करने दिस हो गया. आई होप all of you are better understood about factorization. After that factorization, x minus 8 minus x minus 1250 equal to 0. Here is the multiplication between two figures equal to 0. That's why 1 must be 0. एक फिगर 0 होना ही चाहिए, इसीलिए we can write either x minus 8 equal to 0 or x minus 1250 equal to 0. After solving x equal to 8, x equal to 1250. Our answer will be what is the question? Find the level of sales at which company covers its cost. Level of sales मतलब कितना सेल्स करने के बाद हमारा कॉस्ट पूरा क्या होगा, वापस आ जाएगा, कितना. तो 8 आइटम के लिए 8 का मिनिमम क्या है, यहाँ पर 8 और 1 to 5 में 8, तो 8 ऑब्जेक्ट सेल्स करने के बाद जितना हमारा कॉस्ट हुआ, टोटल कॉस्ट फॉर 8 आइटम्स, वो हमारा वापस आ जाएगा. तो इसका मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, द लेवल ऑफ सेल्स एट लीस्ट 8 नंबर्स. ओके, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन क्या है 1250. सर 1250 कौन है, नहीं 8 का बाद जब 1250 जब प्रोडक्शन करेगा देखा जाएगा उस टाइम में जितना तुम्हारा 1250 1250 आइटम के लिए जितना तुम्हारा फिक्स कॉस्ट था उतना ही फिक्स कॉस्ट तुम्हारा ये 1250 को सेल करने के बाद तुमको मिलेगा, तो अब हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसे दोनों आइटम मतलब दोनों ब्रेक इवन पॉइंट दोनों मिल रहा है, तो दोनों से ही तुम्हारा प्रॉफिट फंक्शन 0 होगा, ये सही बात है. लेकिन यहाँ पर आंसर मांगा मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल क्या, मिनिमम जब बोला और लेवल मीन्स मिनिमम 8 आंसर होना चाहिए. 8 सेल्स करना है, प्रोडक्शन भी करना है, जब हमारा प्रॉफिट 0 होगा. इसका मीनिंग है हमारा पूरा कॉस्ट आ जाएगा 8 प्रोडक्शन करने के बाद एवं 8 को सेल करने के बाद, ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखो 15 क्या बोल रहा है. A company sells pens at ₹5 per unit. एक कंपनी क्या बनाता है, पेन बनाता है. द फिक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी इज ₹3200. वो पेन बनाने के लिए जितना हमारा फिक्स कॉस्ट है यही होगा. एंड वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेट टू रन 25%. वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू रन 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, ठीक है. Determine the total revenue functions, the break-even point, the total cost function, the number of pens the company must sell to cover its fixed cost. यही हमारा क्वेश्चन है. तो हमारे यहाँ पर क्या क्या गिवन है, गिवन SP of 1 pen equal to ₹5, ठीक है. Let number of production for break-even point be X. कितना प्रोडक्शन करना है ब्रेक इवन पॉइंट करने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट फंक्शन 0 करने के लिए हमारा प्रोडक्शन चाहिए x. तो ब्रेक इवन पॉइंट का रिलेटेड क्या है, प्रोडक्शन प्रॉफिट फंक्शन, दैट मीन्स प्रॉफिट. तो SP ऑफ पेन ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹, यही दिया है पर पेन का. और फिक्स कॉस्ट FC दे दिया, नंबर ऑफ आइटम भी x पकड़ लिया. टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या बोला, द टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोला 25% of the total revenue.
ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू लिख दिया हम लोग, जो बोल रहा है वही लिखा। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा ना, एक एक चीज़ का प्राइस कितना है, ₹5 में तुम सेल किया, कंपनी सेल कर रहा है। अब कितना आइटम एक्स, ताहले टोटल रेवेन्यू क्या होगा 5 × x, देखिए टोटल रेवेन्यू इक्वल टू PX × 5x, ₹5x लिख दिया। 25% निकालो, 25% 25/100 ऑफ मनी इंटू टोटल रेवेन्यू मैंने 5x, कैलकुलेशन करने रुपीज़ क्या है, रुपीज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट ₹5x, ठीक है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मीन्स यहाँ पर क्या लिखेगा, TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, मिल गया। तो टोटल रेवेन्यू तर मैंने देयरफॉर टोटल रेवेन्यू फंक्शंस क्या है, RX = PX × 5x, ये पहले आंसर मांगा ना, क्या मांगा, द टोटल, देखो टोटल रेवेन्यू फंक्शन मांगा। टोटल रेवेन्यू फंक्शन क्या हुआ, एक एक यूनिट का प्राइस इंटू टोटल प्रोडक्शन x 5x, यही टोटल, ये आंसर मिल गया, एक आंसर, ठीक है। दूसरा बोला, दूसरा आंसर मांगा क्या ना, द ब्रेक इवन पॉइंट, नहीं, 2 नंबर है द टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन मीन्स क्या होता है, TBC + FC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट + FC। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले ही हम निकल लिया, 5x/4 एंड 3200, ठीक है। फंक्शन मीन्स एक इक्वेशन, याद रखना, इक्वेशन में कभी यूनिट नहीं आता, इसीलिए कोई यूनिट नहीं लिखा, रुपीज़ नहीं लिखा। तो FCX = दिस 1.25x + 3200, बस हो गया, समझा ना। तो कॉस्ट फंक्शन भी आंसर मिल गया। उसके बाद क्या मांगा, 3 नंबर मांगा ब्रेक इवन पॉइंट, क्या मांगा, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे मिलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा ना, हमारा प्रॉफिट फंक्शन मस्ट बी 0, और देयरफॉर फॉर प्रॉफिट फंक्शन विल बी 0 यूज़ करने के पहले प्रॉफिट फंक्शन निकल गया। प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू क्या है, RX - CX, रेवेन्यू फंक्शन टोटल SP - टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, तो यही मिलेगा 15x/4 - 3200, बस यही है हमारा प्रॉफिट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3। তাহলে देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट, पहले ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग क्या है ना, प्रॉफिट फंक्शन मस्ट बी 0, तो प्रॉफिट फंक्शन पहले ही निकल गया 3200, दैट्स 15x/4 - 3200। तो व्हेन PX = 0, प्रॉफिट फंक्शन 0, द ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर, गॉट इट। तो हमारा ये इसका PX की जगह में क्या लिखना है, एट द प्लेस ऑफ PX प्रॉफिट फंक्शन वी हैव टू राइट 15x/4 - 3200, दैट मीन्स 0, और आफ्टर सॉल्विंग दैट x = 853.33, this is the decimal fraction, okay, but this is not a number, you have to take the approximate number 854, তাহলে break even points will be 853.33 and it is equivalent to 854, clear, break even point निकल गया। लेकिन तुम्हारा किताब में आंसर लिख रहा है 853.33, एम एल अग्रवाल जो लिख रहा है, कोई क्वेश्चन में राउंड फिगर ले लिया कोई क्वेश्चन में डेसिमल फ्रैक्शन का आंसर बोल रहा है, तो जाए हो तुम ऑलवेज राउंड फिगर में लिखेगा, देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट्स इज 854 एप्रोक्स, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पेन्स ऑफ कंपनी must sell to cover its fixed cost. Cover is total cost. It is not total cost. It is only fixed cost. याद रखना। तो फिक्स कॉस्ट तुलने के लिए हमको मतलब वापस मिलने के लिए, फिक्स कॉस्ट रिटर्न करने के लिए, if we want to return our fixed cost, then how much product we should sell हमारे करा उचित, ठीक है। how much product, it's so simple, this is the class 3/4 का sums है, the number of pens of the company must be sold to cover the fixed cost, that means fixed cost by SP of 1, SP of fixed cost by SP of 1, this is the simple questions of class 5। तो फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए फिक्स कॉस्ट को SP से डिवाइड करो, करने से 640 मिलेगा, तो हमको फिक्स कॉस्ट फॉर टू रिटर्न फिक्स कॉस्ट into the company we have to sell 640 items, just fine, okay, thank you, please subscribe and comment us.
online and offline classes of academic and competitive examinations of various entrance and services are available. If you want to join with us, you can communicate with us through our mobile number or email address or comment.